to wish you all a very happy Teachers Day. कहते हैं माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है और पिता हमारे सबसे पहले दोस्त होते हैं. Parents are the first teacher, guru, mentor for a child. We are honored to see the overwhelming response we got from you, and today we will discuss about different challenges we face as a parent. Parenting is a lifelong journey, and it's an important responsibility. So let's do it with mindfulness. आप सभी पेरेंट्स का मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज इस वेबिनार के माध्यम से हम हमारे बच्चों के विकास, बेहतर विकास और बेहतर परवरिश के बारे में सभी जरूरी बातों पर डिस्कशन करने में सफल रहेंगे. Every parent wants to become a role model for their child, and parenting is not easy. So let's move ahead and let's learn some new techniques from our speaker today, Ms. Dimple Mehta. Dimple is a founder of Soul Diets. She has 15 plus years of experience as a parenting coach, mentor for teachers, as a theater coach. Her mindfulness techniques, character strengthening techniques has helped many individuals in reaching their highest potential and their best capabilities. So I would request Dimple to take over this virtual stage today and address our dear parents. Over to you, Dimple. Hi, good evening, everyone. And thank you so much for such a warm welcome, Chikita. I would also like to open the session with wishing everyone a very happy Teachers Day. And as rightly mentioned by you, actually, बच्चों के parents उनके पहले teachers, उनके पहले guru, lifelong mentor, और जीवन भर के दोस्त होते हैं. This is a proven fact. All of us are impressed, are floored by and wowed by seeing our parents going through so much struggles and everything, and simply coming out of it like the pros. So yes, we learn a lot from them. And जैसे कि आपने बात करी mindful parenting techniques की, and parents have a lot of queries and questions around parenting, especially in these lockdown days. Education को लेके, behavior को लेके बहुत सारे questions हैं. I hope हमारा आज का webinar is somewhere helping them to, kind of understand it better, kind of solve what they have, some sort of confusion in their mind. So let's begin it. So Chikita, I would like to begin the session by sharing something, and then we'll take it forward from there. Is that okay? Yeah. Just give me a go ahead if you... Is it visible? Is the slide visible? Yeah. Okay. Yes. So Yeah. Thank you. So let's open the workshop by understanding what mindfulness is. Before that, let me just tell you a bit about what we do. We have created a close to my heart brand called Soul Diets, and we kind of work on mindfulness, on strength training with corporates, with children, with individuals, and help them to reach the highest level of possible happiness in life, and see a better way of looking at relationship things, and especially education for our children. The way the nature has its own way of creating a harmony by keeping a line of all 5 elements of air, water, earth, fire and ether. जैसे हम सब जानते हैं कि हवा, पानी, धरती, आग और आकाश के बिना आप इसमें से कोई भी एलिमेंट निकाल दें, धरती कंप्लीट नहीं होती, हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट नहीं होता, नेचर में हार्मनी नहीं होती. Simply, you need to balance out everything within you. We work on the senses, we kind of align them, we help you to bring the best in you, which is there, you are just not aware of it. And that is the subject around which we conduct workshops. That's Soul Diet. Now coming to addressing the thing we are going to talk about, parenting. मुझे बहुत सारे पेरेंट्स से पूछते हैं कि पेरेंट तो पेरेंट होते हैं, then what is the difference between parenting and mindful parenting? पेरेंट्स के लिए सबसे पहली चीज ये है that I want to share this thought, which is I feel very disheartened when parents come to me and ask me in my workshops, when we do parenting workshops with them, am I a good parent? Am I the ideal parent for my child? मैं अच्छे से पेरेंट
ban raha hu na, is my kind of, you know, grooming is right for my child. Let me tell you all, assure you all are the best set of parents your children can get. आप अपने बच्चे को जाके पूछिए कि okay, you know, if I give you a choice, would you switch me for anybody in this entire world, including their favorite actors? They will never. So that is your certificate of parenting. Every parent is brilliant out there. We all are trying to be the best we can do for our children. So that's one proven fact, that all of you are brilliant all together there. But just to technically understand what parenting is the process of promoting and supporting, of course, a child, the physical aspect, how the child is growing, the emotional aspect, how is he behaving or dealing with the environment or the relationship or people around, the social, how well is he connected. Like we keep telling our children, you know, speak properly, behave nicely. So a parenting aspect is connected to the social growth, the intellectual development of a child throughout. That is parenting for all of us. Now ye to hum sab kar rahe hain. Now what is the difference between this parenting and now what I'm going to tell you about mindful parenting? You first understand it through this slide, and then I'll take you a little deeper into mindful parenting. Mindful parenting, the first aspect is, before even you think of becoming a parent, you kind of notion it down how to be one. You're very conscious about who you are at the very first day, from the very moment. Okay, so mindful parenting begins with managing your own emotions. Only if I am mindful, I'm going to be a mindful parent or a mindful spouse or a mindful boss or a mindful co-worker, so on and so forth. So how conscious are you about your own emotions and behavior? The first aspect of mindful parenting, the difference between the two. Second, realizing that you're distracted, it is an opportunity to make a choice to be present. Now, most of us, even now attending this webinar, if I ask you a small question, are you all attending the webinar? The answer will be yes, and that is parenting. That is parenting, okay? Are you attending the webinar? Are you thinking of something else? Now, if I tell you, आप अभी मेरे साथ हैं, you are thinking of कि आप इससे पहले क्या काम अधूरा छोड़ के आए हैं और वेबिनार खत्म होने के बाद कौन सा काम जाके पूरा करेंगे, right? So there is a lot which is going on. You are with me here live, but you are not here with me from here with your conscious, all right? So when you realize that you are getting distracted again and again, it is only through mindfulness that you realize and bring back your conscious again to the present moment, and you take the best out of what is there for you. What is there for you, okay? So that is the second difference between parenting and mindful parenting. Coming to the third one, which is again very important. It means that you bring your conscious attention to what is happening instead of getting hijacked by your emotion. The ideal epic thing every parent is doing. For example, I'll just make it a little simpler for you to understand in a layman's language. कितने लोग जो चश्मा पहनते हैं उनका 99.9% चश्मा या तो सर पे रहता है या जेब में, and you know they don't know on the face of earth where the spectacles are. मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है. After 20 minutes they'll find out, it is right there, when simply your child will come up to say, Papa, you're wearing it on your head instead of wearing it at the right place. So you know that something is there, but you get hijacked. You don't know it is right in front of you. Another example is that sometimes if we all drive, we drive through the same alley, we drive through the same road, और आपको 1 महीना 1.5 महीना बाद you realize that there is a new something which has popped up, maybe a new underpass, maybe a new shop, maybe some new construction or something like that, and you while driving through that you realize, yeah, how come I didn't notice? Ye kab construct ho gaya? That is mindlessness. You are going through the same phase again and again, but you don't even pay attention to what is happening around you. Right now, are you conscious about where you are sitting? What is the height of the chair you're sitting on? Are you in the right position? Are you comfortable the way you're sitting, or you want to readjust yourself? You want to be a little mindful about it? Is the back aching? The shoulders are stretched? Relax. That is mindfulness. Just bringing you back to where you are. All right. Going ahead, the most important thing
that I'm going to take up today and talk to every parent about is listening, 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 listening. The difference between parenting and mindful parenting, or any other relationship, if you're mindful about it, in parenting, you hear your child saying something. आप रोज सुनते हैं कि आपके बच्चे आपसे क्या कह रहे हैं, what are they asking for, but you actually don't listen. आप पहले ही बच्चे की बात शुरू होने से पहले ही ये बोल देते हैं, I know what you're going to say. I know what you're going to say next. You are so well aware of everything that you kind of preconceive it within your mind, or you don't listen. You don't have a listening ear. You may be hearing them out, but you don't listen. Now then what happens? You have a preconceived notion. आपको पता है पहले से कि क्या होने वाला है. You miss on that magic of what your child is actually trying to tell you. And then you don't respond, you react. You react. At times, you are in a very, very important meeting, you're working from home, you're stressed, you're kind of, into an argument, and here your little one comes and says, Papa, I want to say something. And you, without even, noticing, or without even giving him a listening ear, you just say, that I know what you're asking for. You must be asking for the game again, or your mobile must have hanged, or anything like that. I'm not interested. Come after half an hour. Abhi aap mujhe disturb mat karo. And the poor thing will simply say, Papa, you forgot your mobile outside. It was ringing, and it's your boss. And you realize that you kind of pre-decided what your child is going to deliver. You are actually not listening. कितनी बार ये होता है कि हम अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, अपने बॉस को, अपने कलीग्स को भी बात बोलते हैं. You first react, maybe very hyper, and then after 5 minutes you say, oh shit, I thought you were saying something else, but you were talking about another thing. Gosh. So because you were just hearing them out, you were not listening them. Very, very important for every parent to listen to their children. And one more thing is being non-judgmental. Mindful parenting teaches you how to be non-judgmental, how not to judge every time you have a face-off with your child. Every time your child is crying, don't judge that he's in a habit of crying. Every time your child is complaining about something, don't judge that, he's always cribbing. No, they don't crib out of nothing. But it's you judging them forces them to do it repetitively to get your attention, quality attention. So next time, whenever somebody, not only your children, is saying something to you, just listen to it like a clean board. See what they have to say. Think about it, take a pause, breathe, and then react. Don't respond. So that is the main difference between parenting and mindful parenting. Now, coming to the benefits of mindful parenting, I want to talk about the benefits of mindful parenting. They're endless. They're simply endless. To begin with, I'm just touching upon few, and then I'll go a little deeper into it. Of course, as I told you, you become more aware of your feelings and thoughts, how you're actually feeling. Sometimes you are so overwhelmed with something. You had a bad day back at office. You were not getting good connection, so you missed out on an important meeting. You had a bad day with your client. I don't know, but you're so overwhelmed with the previous thoughts that you take them out on these little fellows at home. आप मानिए मत मानिए, because children take the maximum load of unwanted stress and fear that we pass to them unwillingly, unconsciously. But just the vibe of you. Sometimes I remember, even when I was young, my mother could sense that my father was in a bad mood, and she would rush inside and say, aaj aap log halla mat karo, don't just be quiet. I can feel that Papa is not in a good mood. Children are very, very fragile to these emotions. They're very, very fragile to these emotions. So when you're mindful, then you kind of step into the house without that baggage of office. You're very conscious about that. Now this is my time with my family. This is my time with my children. Right? I have seen so many parents who tell me, Dimple, I spent so much of quality time with my child, but still no bonding. I want to ask them, what do you mean by quality time?
क्वालिटी टाइम डज नॉट मीन कि आप दिन के 2 घंटे अपने बच्चे के साथ बिता रहे हैं हैविंग अ मोबाइल इन योर हैंड और हैविंग समथिंग इन योर हेड. It's cheating. It's cheating, all right? You can't be present with your child if you are somewhere else from here. You're disconnected. And a child can feel it very, very strongly. So, mindful parent is very, very conscious about the feelings and the thoughts, what kind of a mood they are in, all right? You become more aware of the response of your child's need, thoughts, and feelings, as I told you. आप हो सकता है यू हैड अ बैड डे एट ऑफिस, या आप एज अ मदर आज आपसे कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपको घर में कुछ सुनने पड़ा, या आपको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई एंड यू आर इन अ बैड मूड. अब एक बार ये सोचिए कि क्या आपके बच्चे का इस पूरे सिनेरियो में कोई रोल है? इज योर चाइल्ड प्लेइंग एनी पार्ट इन योर बॉस स्कोल्डिंग यू, इन यू एंड योर स्पाउस हैविंग अ फाइट? The child has no role. Now the child comes to you and says, Mama, I had, got 10 out of 10 in my test today. Wow. And you give a very lukewarm response. हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं. I'm not in a good mood. Tell me, is it fair on your part? आप ठीक कर रहे हैं? Are they the ones to take the burden of the stress your boss might have given you, or your spouse might have given you, or you have given yourself? आपको लगता है पेरेंटिंग डिफिकल्ट है बिकॉज आप सब कुछ मिक्स कर रहे हैं. यू आर नॉट सॉर्टेड. अ चाइल्ड वुड क्रिएट लीस्ट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बिलीव यू मी, if you're mindful about how you're dealing with your children, how you are responding to their needs, thoughts, and feelings. It is very, very important at your part to become conscious about it. You become better at regulating your own emotions. As I was just telling you, कि जब आप घर से बाहर हैं तो आप ऑफिस के मोड में हैं, और आप घर आते हैं, अब तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी ऑल आर इनसाइड द हाउस. तो ठीक है, जब आप ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यू आर इन दैट मोड. बट एज सून एज यू स्विच ऑफ योर लैपटॉप, प्लीज बी माइंडफुल टू रेगुलेट योर इमोशन. नो मैटर आपका कितना बुरा दिन गया हो, अपने आप को ये बता दीजिए दैट योर चाइल्ड हैज नो रोल इन इट. उनकी कोई गलती नहीं है. वो सुबह से वेट कर रहे हैं व्हेन माय फादर इज गोइंग टू बी फ्री to come to me and we are going to talk, or mama is going to be free and we all will have good family time. That is being mindful about regulating your emotions. Okay, your child becomes less critical about yourself and your child. Okay, you become less critical. जैसे मैंने आपको अभी बोला, parents keep telling me बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत एग्रेशन है, और मैं उनसे ये पूछती हूँ क्या आप प्लेजेंट हैं 24/7? आप बिल्कुल प्लेजेंट हैं, हंसते हैं और वो सामने से हमेशा गुस्सा करते हैं? अगर आप प्लेजेंट नहीं हैं तो आप ये एक्सपेक्ट 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे से भी नहीं कर सकते. They are also sailing through the lockdown. They are also going through the pandemic. जैसे आप काम करें ऐसे बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं. What is the difference between your stress and theirs? Just because you have a higher level of stress because of the obvious reasons and obvious responsibilities on your shoulders does not make your child pay the price for it. They are not at fault at all. And आपके नजरिए से अपने को देख देख के बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है. आप जब बच्चे को बार बार ये बोलते हैं आप ही गलत हैं, आप इतना शोर कर रहे हैं, बस आप ही कहना नहीं मानते, बाकी सबके बच्चे सुनते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं ये समझ ही लेता है कि मैं यूजलेस हूँ. बिकॉज मम्मा पापा दिन में 40 बार तो बोल ही देते हैं कि मैं यूजलेस हूँ. राइट? यू आर बीइंग वेरी वेरी क्रिटिकल टू योर चिल्ड्रन. So be very conscious about how you are behaving with them. You become better at standing back from situations and avoiding impulsive reactions. Again. During the lockdown, we see so many children having a face off with their parents day in and day out. I see so many parents coming to me, calling me up, messaging me, attending the webinars and saying, बिल्कुल बच्चे नहीं सुनते हैं. And again, I ask them the same question. क्या आप सुनते हैं? क्या आप सुनते हैं? अगर आप नहीं सुनते हैं तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो भी सुनेंगे. राइट? वो किसको जाके बोलेंगे? डू यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू गो आउट इन द लॉकडाउन एंड स्पीक टू स्ट्रेंजर्स आउटसाइड? आपसे ही सुनेंगे, आपसे ही बात करेंगे.
और उसमें होता क्या है, क्योंकि आप सुनते नहीं है तो बच्चे का वॉल्यूम थोड़ा सा और ऊपर होता है, फिर आप सुनते नहीं है, फिर बच्चे का वॉल्यूम थोड़ा सा और ऊपर होता है, फिर होते 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 आप उनका वॉल्यूम मैच करते हैं, वो आपका वॉल्यूम मैच करते हैं, एंड माय गॉड, इट इज सो मच ऑफ chaos गोइंग एट होम. So what did you end up doing? No office work, no homework, and you have a very aggressive excuse me, you have a very aggressive child in your hands. So the more you understand mindfulness, the more mindful you are as a parent, it will improve your relationship, your bonding, your connection with your child beautifully. As I was telling you, your relationship with your child will improve automatically. And I just want to add one more thing. In your relationship with your children, sometimes we feel these tiny little fellows deserve love, हम प्यार करते हैं, deserve attention, हम attention देते हैं, deserve all kind of comforts, तो हम खाने पीने से लेके उनके रहने तक सब चीज का इंतजाम करते हैं, best school, best education. One thing which parents forget and they think children don't need it is respect. हमें लगता है अरे बच्चा तो छोटा है, उसका रिस्पेक्ट से क्या लेना देना, रिस्पेक्ट इज ओनली वन वे ना, दे नीड टू रिस्पेक्ट अस, हम बड़े हैं. That's unfair. That's unfair. And what is the form of respect towards children? Listening, smiling, encouraging. ये सुने कि वो क्या कह रहे हैं, समझे कि वो क्यों कह रहे हैं. Understanding them is showing respect towards their feelings, is showing respect to your child that I'm here to understand you. I respect your feelings. जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं, मैं हूं सुनने के लिए. So these are the brilliant benefits of mindful parenting. Now, I want to touch upon learning, the topic these days, which we all are going through, the educators, teachers, and what a beautiful day to talk about learning. Better than what better than Teachers Day. Let's understand what learning is also. ये एक और सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं. वैसे तो आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं लर्निंग को कुछ सीख लो, कुछ भी सीख लो, बस वो लर्निंग है. Let's understand. Learning involves understanding related ideas and making connections between prior and new knowledge, independent and critical thinking, and ability to transfer knowledge to new and different contexts. अभी आपको ये बहुत heavy लग रहा होगा, but there is nothing heavy about it. Learning का मतलब है, learning involves understanding what is going around us. हो क्या रहा है. Learning सिर्फ बच्चों से related नहीं है, आपके, मेरे से, टीचर्स से, एजुकेटर्स से, पेरेंट्स से, सबसे रिलेटेड है. लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, रिलेटिंग आइडियाज, व्हाई इज इट हैपनिंग, मेकिंग कनेक्शंस, हु ऑल आर गोइंग थ्रू इट. आपकी पहले की नॉलेज और अब की नॉलेज आप अपग्रेड करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं. पहले आपको सिर्फ गार्डनिंग आती थी, अब आपको कुकिंग भी आ गई है. सो यू लर्नड न्यू थिंग एंड यू काइंड ऑफ अपस्केल योरसेल्फ. पहले बच्चे फिजिकली स्कूल जा रहे थे और कंप्यूटर्स पे कुछ सीख रहे थे, अब बच्चों ने ब्रिलियंटली कंप्लीटली ई लर्निंग सीख लिया है, right? So they are kind of upscaling them, and then what do they do? Their ability to transfer it. आज जो बच्चे सीख रहे हैं, यही बच्चे कल को जाके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं. आप जो बचपन में सीखे हैं, वही चीज आज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रही है. So that is the process of learning in a layman's language for you all. Now, learning involves understanding related ideas. Now, in a world of preschool education, learning की definition प्री-स्कूलिंग में थोड़ी सी ज्यादा गहरी है और थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत है मेरे लिए. Let's understand what does learning mean when we are talking about the early education or the preschool education. In the world of preschool education, it is called the structured play. This is called the structured play. As we know, the best form of teaching a child, especially with the younger children in hand, is how to make them learn the play way. Okay, and that's why these schools are called play schools initially, then nursery, सब में छोटा छोटा होता है सब कुछ, they're very young, they're kind of trying to learn from these are the foundation years. Okay, and one of the best ways for young children to learn new things is through structured play. Okay, these days online learning is the best form of structured play. Believe me, we are going to talk about it in a little detail. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ that online learning is the best form of structured play? Now, let me differentiate here. I'm not talking about YouTube when I'm talking about e-learning, parents. YouTube देख के बच्चे YouTubers बन सकते हैं, audience बन सकते हैं, students नहीं बन सकते.
That is why it is mentioned there, structured play. Means structured learning. Means learning through a curriculum. Learning the school way. ये आपको लगता है कि आपने ओके स्कूल में क्या कराएंगे इतने छोटे बच्चों को ऑनलाइन? कुछ नहीं कराएंगे, एक वीडियो चला देंगे, दिखा देंगे, बस हो गया, वो तो हम भी दिखा लेंगे. Be a little mindful about it. क्या आपको लगता है that is the right way? Just by playing a YouTube video? आपको नहीं लगता आप टीचर्स के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ अनफेयर हो रहे हैं, थोड़ा रूड हो रहे हैं? A teacher who is teaching young children has a curriculum in hand. She has been trained to teach a young child. She knows the pedagogies to shape up your child. She is going to give a foundation to your child to go ahead in the next class. This is an academic year which is going on. I see so many parents telling me, मैम क्या होना है इस साल, ये साल तो वेस्ट है. Really? आप लोग घर से क्यों काम कर रहे हैं? Why are you all working from home? अगर साल वेस्ट है तो आपके लिए भी तो है. आप लोगों को क्यों घर से काम करने के लिए, you are getting paid, you are getting, everything is happening structured wise ना. आप लोग अगर सॉफ्टवेयर में हैं तो आप भी यूट्यूब पे सॉफ्टवेयर वीडियोस देख लीजिए. आपको ऑफिस में जाके काम करने की क्या जरूरत है ऑनलाइन? आप अगर डॉक्टर हैं तो आप घर में ही यूट्यूब देख लीजिए. आपको जाके वहां पे ऑनलाइन अटेंड करने की क्या जरूरत है? पेशेंट्स को सुनने की क्या जरूरत है? Do you really think learning can happen just like that? Or online learning is absolutely as random as watching a YouTube video with your child? No, you're completely wrong. Online learning through a school, through a proper curriculum, through a proper structured way is very, very important. Very important, because this is the foundation year for your child. जो एक टीचर आपके बच्चे को रोज उसकी ग्रोथ उसके पेस के हिसाब से सिखा सकती है, वो ना आप और ना यूट्यूब वीडियोस या कोई एजुकेशनल ऐप सिखा सकती है. बिलीव यू मी, टीचर्स आर देयर वर्किंग डे इन एंड डे आउट. उन लोगों ने ऑनलाइन ई लर्निंग के हिसाब से ब्यूटिफुल करिकुलम्स दे हैव प्रिपेयर्ड. My children are also learning online, and I'm so proud of the fact that the teachers, fraternity and educators are doing a brilliant job. उनको मालूम है कि एक दिन में आपके बच्चे को ह्यूमनली कितना और क्या पढ़ाना है. ये ना आपको पता है और ना यूट्यूब को. ठीक वैसे ही जैसे आपको पता है कि खांसी की दवाई कौन सी है, लेकिन कब देनी है और उसके साथ साथ क्या प्रिकॉशन लेने हैं, डॉक्टर ही बता सकता है. आपको भी पता है that YouTube and these apps, if they go wrong, they really go wrong. Yes, they might be of some help. आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपने गूगल किया, you are learning more about it, that's fine, I totally respect it. या आपके बच्चे को कोई एजुकेशनल प्रोग्राम पसंद है, आप दिखा रहे हैं, that's brilliant. But you cannot compare it with e-learning or a structured school learning. No, they can never compensate or they can never replace a school. दिस इज द फाउंडेशन ईयर. क्या बदला है? अगर पैंडेमिक नहीं होता और ई लर्निंग नहीं होती, आप नॉर्मली अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे होते हैं, घर पे बैठ के आप उनको ऐप से पढ़ा रहे होते हैं. So nothing has changed. The teachers are taking the classes, they're giving proper revision work, proper homework, proper handouts, and brilliant books, academic books for the right kind of revision. They know age appropriately कि इस टाइम पे बच्चे को क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना. So that is learning. Learning can be any physical, mental or activity that teaches preschool age children new skills. As I was telling you, only a teacher knows स्ट्रक्चरली कि इस एज पे अप्रोप्रिएटली क्या करिकुलम डेली बेसिस पे आपके बच्चे को जाना चाहिए, वो कितना समझ सकते हैं, कितना पढ़ पाएंगे, कितना रिवीजन कर पाएंगे, because they are the pros at it. They've been teaching young children for over a time. They've been trained, they've been upskilled. All teachers these days, let me tell you, my dear parents, are going through these skill trainings on e-learning. वो लोग भी सीख रहे हैं. तो अगर उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है टीचरों के, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे एक एप्लीकेशन से सीख सकते हैं? नो, यू नीड टू बी विद देम hand in hand with teachers and lay that foundation year. This is a very important year for your child. आप इसको जितना लाइटली लेंगे उतना नुकसान आपके बच्चे का होगा और कहीं ना कहीं आपका होगा. So be very serious about it.
as I was telling you, in extension to the structured learning thing, the goal of structured play is to have fun while teaching a child. Often kids do not even know that they are learning, and adults can have just as much fun as designing new ways to keep the children active while learning. Exactly what teachers are doing during their online sessions these days. आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने बच्चे को कुछ तो ऐप या कुछ तो घर में वर्कशीट्स दे दी. अभी बच्चा अपने हिसाब से थोड़ी देर टैब पे वो वर्कशीट्स करेगा, और थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो अनसुपरवाइज्ड है, आपके पास कोई करिकुलम नहीं है, वो थोड़ी देर में कुछ और गेम लगाएगा. ही माइट गेट बोर्ड एंड दैट्स अबाउट इट. डू यू थिंक यू कैन कॉल इट स्कूलिंग? आपको लगता है कि ऐसे ही बच्चा पढ़ पाएगा और अगले साल जब आप नेक्स्ट क्लास में उसको डालेंगे तो वो पूरा स्किल्ड अप है? School teachers are coming out with these brilliant, sometimes with these PPTs, sometimes with these age appropriate worksheet, but they're doing it every day, step by step, A for apple, B for ball, C for cat, and so on and so forth. उन लोगों का करिकुलम, एक स्कूल का, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का करिकुलम is fun while learning. So rather than making them sit in front of an app, why not you make them sit in front of a teacher? And ये बच्चे जो अभी सीख रहे हैं टीचर्स से स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग में, the parents are saving a lot of money on tuition, let me tell you that, because अभी जो बच्चों के फाउंडेशन ईयर्स में क्लैरिटी टीचर्स दे रहे हैं ऑनलाइन, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्योंकि सिखाया जा रहा है तो वन ऑन वन बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है. बिकॉज पहले ही होता था, फॉर एग्जाम्पल, दैट इफ अ टीचर वुड आस्क अ क्वेश्चन सिंपली इन द क्लास, तो 30-40 की क्लास में से कोई एक बच्चा वुड आंसर दैट एंड द इंटायर क्लास इज सॉर्टेड. अब क्या है, टीचर इज मेकिंग अ चाइल्ड अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, और फिर पूरी क्लास को एक ही शीट करने के लिए मिलती है, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर. सो एवरी चाइल्ड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली हैव टू प्ले अटेंशन कि मुझे इसका आंसर लिखना है. और बच्चे का डिसीजन मेकिंग स्किल इस फाउंडेशन ईयर में इतना सुपर फास्ट हो जाता है. आई हैव सीन माय चिल्ड्रन इंप्रूविंग वे टू मच, बिकॉज 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर टीचर वुड से कि बच्चों आपको ये कलरिंग फिनिश करनी है, जल्दी कीजिए. तो आप देखिए बच्चा कितनी जल्दी डिसीजन लेता है. व्हाट आर द कलर्स ऑफ अ फ्लैग, टक 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 टक, बिकॉज द चाइल्ड हैज टू कलर देम फास्ट. वो ग्लूड है, उसको डिसीजन मेकिंग जल्दी करना है. एंड this is how they improve on their fundamental skills. Now coming to importance of structured learning, as I was talking, they learn to interact. Ek app is one way learning, but e-learning is not one way learning. Teachers are talking to children, the children are talking to their peer groups. वो लोग आपस में भी बात करते हैं, teachers questions पूछती हैं या rhymes पूछती हैं, they sometimes do a role model kind of thing, and it's a interactive learning. जैसे स्कूल में होता है वैसे ही e-learning हो रही है. It gives kids a chance to have fun. Of course, when they see that they are very dull, they have a mobile in hand, एक सोफा में, कॉर्नर में, like a couch potato, they'll sit down and वो अकेले गेम खेलते रहते हैं. They feel isolated, aloof. ऐसा ही लर्निंग में नहीं होता. जब आप पूरी क्लास के साथ हैं, आपके साथ 20 बच्चे और हैं या 30 बच्चे और हैं, you are having fun. कोई बच्चा किसी चीज का जवाब दे रहा है, the other child will answer back. So they are interested in knowing more because they have their own peer group there learning the same thing. So they are having fun. Age appropriate learning, as I was telling you, teachers को पता है कि कौन सी एज के हिसाब से, कौन सी क्लास के हिसाब से बच्चे को किस टाइम पे क्या चीज पहले सिखानी है, उसके बाद फोनिक्स कैसे सिखाने हैं, उसके बाद वर्णमाला कैसे सिखानी है, where we are going to introduce colors, when we are going to talk about national symbols. I'm just quoting an example, so on and so forth. That is structured age appropriate learning. Then connecting them to books is the right kind of foundation that the teachers are giving. I see my children are getting read a story about freedom fighters. I love this kind of a homework. I love this kind of a revision work, because somewhere my daughters have to, sit down and read a book because they've been told. Children are getting completely disconnected to books. Why? Because आपने एक ऐप दिया, उसमें कुछ गेम किया, सॉर्टेड, उसने कलरिंग किया, खत्म. कितने बच्चे घर में बुक्स पढ़ रहे हैं या आप अपने बच्चों के लिए स्टोरीज पढ़ रहे हैं? I think not even 10% of the entire percentage we have here present with us. Very unfortunate. But when a teacher is giving some kind of revision work or a homework, whatever you may call it, it's a brilliant way to connect your children with books.
It is a very, very beautiful connection when you see your child, instead of having a mobile or a tab in hand, the child is saying, Mama, I have to go back to my teacher and give these 3 answers. Let me open my book and, write the answers. So they are kind of connecting the children to the books back. Now, the best thing of this entire learning, it is a common misperception that early childhood education is only about learning the basic skills. क्या है? कुछ तो सिखाते नहीं है. Basic चीजें हैं, वो तो हम भी सिखा लेंगे. No. It is so much more than that. It's a time when children learn critical social and emotional skills, and a partnership is formed between the child, their parents, and the teachers. When this is done successfully, it lays down the groundwork for what they continue throughout the child's education. आपने भी देखा होगा, जितनी खूबसूरत इमारत होती है, उतनी पक्की नींव होती है. If the basic concepts are not clear to your children, which you think are very easy to teach, they are not going to be clear throughout their education years. They're going to be very, very confused. क्योंकि आपने उनको बेसिक फाउंडेशन ईयर ही मिस करा दिया ये सोच के कि क्यों कराना है ऑनलाइन, क्या जरूरत है, हम ही करा लेंगे. So this is why you need it. Now let's understand e-learning a little bit better. E-learning is a learning aid. कितने लोगों को ये लग रहा है कि e-learning means they're just passing times, teachers आएंगी, they're just going to kind of kill time with our children, बात करेंगे. No, it's a proper learning aid. जैसे आप स्कूल जाके बच्चे सीख रहे थे, वैसे ही बच्चे e-learning पे सीख रहे हैं. These platforms and softwares help children remember information more clearly. Now, this is a brilliant thing. मैंने आपको अभी बोला, what does a teacher would do? वो उनको कुछ भी 40 मिनट्स के लिए पढ़ाएंगे और उसके बाद बच्चों को एक बहुत फन एक्टिविटी दी जाती है. ओके बच्चों, हमने जो आज पढ़ा उसके बेसिस पे मैंने ये फन एक्टिविटी रेडी किया है. आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप आंसर कीजिए. एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू देन एंड देयर give the answers, and teacher would say, okay, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, the recording is available there. That's the best part of e-learning. The recording is available there. आप दोबारा देखिए, दोबारा समझिए. इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है. क्लास में तो जब टीचर एक बार बोल दिए, अगर आपको कोई चीज अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ में आई तो फिर आप क्या करेंगे? या तो आप ट्यूशन लगवाएंगे या आपके पेरेंट्स आपको उतना टाइम डिवोट करेंगे कि आप उसे समझ सकें. यहाँ पे एवरीथिंग इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो यू कैन काइंड ऑफ टेक इट आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड यू कैन रीड इट अगेन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर. Motivate them to develop working schedules. Of course, there is a school which is going on. They have to wake up timely, they have to attend the classes timely, they have to submit the homework timely. What's wrong in it? What's wrong in it? That is what is the purpose of schooling, isn't it? Bringing that uniformity to them, putting them into the discipline of learning. Isn't it brilliant that our teachers are managing it online? I mean, I wow them. It's a brilliant thing that they are they are managing that uniformity. अभी आप देखिए, I don't know कितनों के बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अभी स्कूल में नहीं डाला. Be honest to yourselves. आप खुद ये बताइए कि कितना आपका बच्चा उसी टाइम पे रोज पीरियड अटेंड कर रहा है, या आप उसको उसी टाइम पे रोज उतनी ही ईमानदारी से एक पूरा टॉपिक करा पा रहे हैं? नहीं करा पाते. अभी थोड़ी देर में बिकॉज यू हैव अदर प्रायोरिटीज, नहीं हो पाता. वो तभी होगा जब स्कूलिंग होगी, वो तभी होगा जब बच्चा एक यूनिफॉर्मिटी डिसिप्लिन में आएगा. इट सपोर्ट्स देम मेंटली व्हेन दे विन और लूजिंग. अगेन, आपने ऑनलाइन किया, आपको उसी सेकंड आ जाता है, यू गॉट 10 out of 10, you got a 9 out of 10. So they kind of get appreciation there and then. उनको अच्छा लगता है. और the teacher will say, oh wow, so and so did all answers right. Wow. वो पेरेंट्स को आप अभी काम कर देंगे, फिर आपका बच्चा बोलेगा, ममा कैन यू चेक इट. ममा विल से, बच्चा अभी राइट नाउ आई एम बिजी विद कुकिंग, आई विल कम बैक टू यू. So that the momento goes down. There is nobody to appreciate what the hard work the child is doing. But the teacher would do, because she's dedicatedly there for that work, to motivate your child, to teach your child. So that's another this thing. Fostered interaction when working in groups.
अभी मैंने देखा, अभी आज टीचर्स डे पे आई वाज अटेंडिंग अ वेबिनार ऑफ माय चाइल्ड स्कूल, देयर वाज अ प्रेजेंटेशन बाय चिल्ड्रन। अपने अपने घर पे बैठ के ये सब छोटे छोटे बच्चों ने एक साथ, दे हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल हार्मनी फॉर देयर टीचर्स, एक साथ काम किए, एंड आई कुड सी माय चिल्ड्रन थ्रिल्ड जब उन्होंने अपने आप को वो स्कूल के वेबसाइट पे देखा। दे वर सो हैप्पी, ममा वी डिड इट टुगेदर, मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड्स मेड दिस। सो दिस इज द बेस्ट वे कि वो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो अपने पीयर ग्रुप से बात कर सकते हैं। डोंट कीप देम डिप्राइव्ड ऑफ दिस। Children develop better hand eye coordination. As I was telling you, I am amazed to see कि आजकल ये ई लर्निंग में जैसे ही टीचर्स बोलते हैं यहाँ से कलरिंग कीजिए, my children know the tool. By the time I look out for the tool, where is it, they know, they will color and they will submit. They know how to upload a PPT, they know how to download a PPT, they know how to take out notes. They are learning everything which is being taught to them. An app is not going to teach you all this, or you are not going to teach your children all this. So let me tell you, technology is the new face of education. तो अगर आप अभी नहीं सिखा रहे हैं तो जब पूरी क्लास आगे निकल जाएगी तो आपके बच्चे को बाद में सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। They'll come back to you and say, आपने मुझे तब स्कूलिंग क्यों नहीं कराई मम्मा पापा जब my friends were doing it. It's only me who doesn't know, बाकी सबको तो आता है। Okay, and of course better decision making capabilities. मैंने आपको अभी भी बताया that if something is being asked, it is all time bound. आपको उतनी देर में उस चीज का आंसर करना ही करना है। So उनका डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प होता है, बहुत बहुत शार्प होता है। मुझे आंसर करना है, मुझे सबमिट करना है, मुझे अभी के अभी ये चीज अपलोड करनी है। So डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है, बच्चों का दिमाग तेज होता है। बेटर कनेक्शंस विद बुक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी टीचर रिविजन के लिए देंगे या स्टोरीज पढ़ने के लिए देंगे, क्योंकि आपके बच्चे को कमिंग फ्रॉम अ टीचर है, वो उनको सीरियसली लेते हैं। दे विल फॉल इनटू अ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट होगा और फिर वो किताबों के और नजदीक जाएंगे, और वही हम सब चाहते हैं। दैट इज व्हाट वी वांट। जस्ट टू टेक दिस अहेड, I've been taking mindfulness classes and theater classes with young children under my brand name Soul Diets, and we do mindfulness and theater and with young children, parents and corporates, and we take education very very seriously in a very fun way. And हम लोग बहुत सारे schools और NGOs के साथ काम कर रहे हैं अभी भी to improve the level of education, to improve the well-being and provide a holistic education for every child. और कौन सी ऐसी एजुकेशन है जिससे हमारे बच्चे सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं। सो दिस वाज द PPT अराउंड द टॉपिक्स आई हैड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल question answer form of the session now, and let me go back to Chikita. Dimple, thank you very much. आप जैसे जैसे बोलते जा रहे थे, I could see my parents. They were nodding and they were smiling. They were connecting. Even in the chat, we can see parents ने काफी appreciate किया है whatever topics you have addressed, and I totally agree with you that ये टाइम है जब हम बच्चों को हमारे सही तरीके से टेक्नोलॉजी को सही तरीके से सिखा सकते हैं, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, उनका लर्निंग कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज आवर फ्यूचर एंड दिस इज आवर प्रेजेंट। सो बच्चों को उससे दूर रखना will not be a good thing, but हमें बच्चों को properly encourage करना चाहिए ताकि वो इसे ढंग से use कर सके और वो उनके growth और development में effective हो सके। So Dimple, I would request you to address some of the queries which we have received. Parents ने हमें कुछ queries भेजी थी registration के time पे, and अभी भी कुछ queries parents हमें already chat box में वो पूछ रहे हैं। So one by one मैं कुछ common topics I'll pick जो parents ने continuously अलग अलग तरीके से वो पूछ रहे हैं, and I would request you to address those queries, और बाकी की जितने भी queries हैं we will keep on addressing our parents. तो एक common query ये आ रही है डिम्पल की online learning में, या जो अभी बच्चे स्कूल से अलग होके ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं लैपटॉप्स पे और फोन पे, जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, जो भी उनका टाइम टेबल होता है स्कूल का एडवांस में वो पेरेंट्स को दे दिया जाता है और बच्चों की क्लासेस लग रही है। बट ये जो प्री प्राइमरी सेगमेंट है, ये जो छोटे बच्चे हैं 6 साल
से कम उम्र के, इनके साथ टेक्नोलॉजी पेरेंट्स कैसे मैनेज करें, कैसे उनको हेल्प करें कि वो फोकस्ड रहे उनके लर्निंग पे, और उसका टाइम और उसका यूसेज कैसे उसको इफेक्टिवली पेरेंट्स मैनेज करें? ओके, पहले तो चिकिता, थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. ये बहुत सेंसिबल क्वेश्चन है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी लुकिंग आउट फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन. टू बिगिन विद, पहली चीज तो ये है कि पेरेंट्स का, उन्हें बात पसंद आए या ना आए, उनका रोल थोड़ा सा बढ़ गया है. पहले क्या होता है, फॉर अ चाइल्ड, it's a fine balance of my favorite teacher and my mama, okay, and they go hand in hand, especially with the age group that we are talking about here, and they kind of role model it. So आपने देखा होगा that the younger children, they don't listen to you that much, but they you kind of, you know, they see and they learn. They kind of, you know, sit the way you are sitting, or they'll come back to you and they say, ma'am, you wear such a pretty sari, my ma'am has, you know, such long hair. They actually get into a lot of role modeling. So we need to understand that we have a young child, and we need to kind of discipline them on online learning, या उनको कैसे बिठाएं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अब पहली चीज तो ये है कि आप बच्चे को अगर कहीं ना कहीं से उसका इंटरेस्ट दिखा दें ऑनलाइन लर्निंग में, तो वो बैठ जाते हैं. जैसे यूट्यूब पे, यू नो, आई हैव सीन इवन टॉडलर्स, मतलब बात करनी शुरू नहीं करी है, दे नो हाउ टू, यू नो, स्विच ऑन द मोबाइल एंड टेक आउट देयर फेवरेट show or an app, and they'll start playing. And so they're pretty smart. They are pretty smart. If you tell them, if you kind of notion them that this is something really brilliant for them, they are going to, you know, get comfortable with e-learning. इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, जो 50-50 रूल था ना, वो अभी 80-20 हो गया है. So there is no personal interaction with the teacher. So parents have to switch off the parenting mode for a while every morning and come into a teaching role. So you are going to, you know, first of all, maintain that routine, that the child is up timely, the child has, you know, taken bath, had their breakfast, and you also are clean, okay, and sitting with them nice and tidy, and you switch on the class, and you know, kind of initially for 8 to 10 days, you kind of sit with them एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द क्लास. और ये कोई चीज नई नहीं है. आप देखिए, जब बच्चे प्ले वे में भी जाते हैं तो 10 दिन तक तो पेरेंट्स वैसे ही साथ आते हैं. ऑलराइट, सो हम अपने बच्चों को वहां पे भी अकम्पनी करते थे, बिकॉज यू वुड नो, जो छोटे बच्चे हैं, यू नो, द मोमेंट द मदर विल कम आउट ऑफ द स्कूल, दे विल स्टार्ट क्राइंग एंड हाउलिंग, मुझे घर जाना है, आई वांट टू गो बैक. सेम चीज है, नथिंग हैज चेंज्ड. पेरेंट्स को ये लग रहा है क्योंकि वो घर पे बैठे हैं, लैपटॉप खोल दिया, नाउ द चाइल्ड इज कंप्लीटली ऑन, यू नो, ऑन हिज ओन, कि वो खुद ही सीख लेंगे. नो, देयर इज नो मैजिक हैपनिंग हियर. You have to spoon feed them slowly, and, you know, sit with them and say, wow, this is the school, and here we are meeting, ma'am. Oh, wow, what are we going to learn? And, you know, kind of create that interest. If the parents are disconnected, the child is never going to connect, never ever going to connect, because abhi is age mein parent ka influence itna zyada hota hai that they see everything through their eyes. And I have seen parents talking about this year is a waste. कैसे बच्चे इतने छोटे पढ़ लेंगे? अरे वैसे ही पढ़ लेंगे जैसे वीडियो गेम खेल लेते हैं, जैसे टीवी देख लेते हैं. उसमें क्या अलग है? There is no difference. There is a teacher who's playing fun games. It is not class 10th, 11th, 12th where, you know, so much of studies and so much of structured education is happening. There's a lot of fun activities. So many schools that I've been conducting these webinars, I kind of sneak into these classes which are happening, and they're so much fun. They're all drama based and activity based, and the perfect thing your child needs right now. उसको खेलना को कोई चाहिए, उसको कोई कंपनी चाहिए. So find that connection, sit with your child and say, wow. And then later, then you are going to tell, you know, talk to your child about schooling. आज हमने कितनी मस्ती करी, आज मैम ने कितना अच्छा सिखाया था, आपने क्या सीखा, उससे रिलेटेड क्या था. Okay, let's do one thing. Let's read a story about apple today. Let's read a story about ball today, okay? Because we learned about apple or a ball. अच्छा चलो कुछ prop बनाते हैं. अच्छा, A alphabet से घर में क्या क्या चीजें हैं. You have to maintain that connection.
There is nothing new which is happening. Chikita, what surprises me is parents are reacting कि कुछ out of this universe हो गया है. Other than the medium, nothing has changed. You have equally responsible and sincere and dedicated teachers on the other side of the screen. जैसे स्कूल और जैसे एजुकेशन चल रहा था वैसे ही चल रहा है, वैसे ही स्ट्रक्चर्ड है. टीचर्स ज्यादा इनोवेटिव और ज्यादा क्रिएटिव हो गए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको ज्यादा अटेंशन लेने के लिए ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स आर सो हेजिटेंट एंड सो स्कैर्ड. उनको विश्वास हो नहीं रहा कि इतनी अच्छी चीज हमारे साथ हो सकती है कि घर पे बच्चे बैठ के सीख सकते हैं, बट इट्स एक्चुअली हैपनिंग. Children are learning so many wonderful things. They are learning how to discipline themselves. क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग सबसे पहली चीज सिखाती है सेल्फ डिसिप्लिन. आपके हाथ में कंट्रोल है. आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप अपने आप को बीच बीच में म्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और उस क्लास खत्म होने के बाद द पेरेंट हैज टू गो बैक टू द चाइल्ड एंड से वाओ, आज एक बार भी आपने अपना स्क्रीन शेयर नहीं किया, जब तक मैम ने आपको बोला नहीं, आपने बीच में बार्जिन नहीं किया, आप कितने अच्छे से सीख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये लगता है माय डिसिप्लिन इज गेटिंग अप्रिशिएटेड. पहले वो टीचर करते थे स्कूल में, राइट? यू वुड से ओ आज आपने इतने अच्छे से होमवर्क कर लिया, वाओ. Now, because you are not one-on-one with every child, so the parent has to do it. The parent has to be the bridge between the teaching and the child. Don't keep them deprived because you are not creating that balance. They are going to learn brilliantly out of e-learning. Absolutely, Dimple. I totally agree with you, because in school also, teachers, they keep on instructing children. हर रोज वो सेम इंस्ट्रक्शंस उन्हें रिपीटेडली बोलती है, बार बार बोलती है, बार बार समझाती है, एंड ग्रेजुअली बच्चा उस हैबिट में आ जाता है, उस एक्सपेक्टेशंस को समझता है, और जैसे जैसे वो उसे मोटिवेट करती जाती है, बच्चे में ऑटोमेटिकली वो सारी हैबिट्स इनकलकेट होती जाती है. आई टोटली अग्री विथ यू. एंड वही सेम चीज आई फील पेरेंट्स को घर पे करने की जरूरत है, कि बच्चे को जब आप मत करो बोलना इज नॉट अ सोल्यूशन. क्या करना है, कैसे करना है, और क्यों नहीं करना है, उससे क्या होगा, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, सो डेफिनेटली द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स. उससे एज उसका कुछ भी हो, अगर आप उसे क्लियरली समझाओ और अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस अगर देते हैं, तो बच्चे डेफिनेटली उस चीज को दे अंडरस्टैंड एंड दे बिहेव दैट वे. So, इसी के साथ डिम्पल, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, जहां पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि बच्चे को ऑनलाइन लर्निंग, दे अंडरस्टैंड कि बच्चे के लिए जरूरी है, बच्चे के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है, और अभी टीचर्स भी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ाने में. सो हम भी एडल्ट्स बहुत टाइम तक स्क्रीन के सामने कुछ चीज में इंटरेस्ट, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन को वहां रखना, फोकस रखना, कनेक्टेड रहना पॉसिबल नहीं हो पाता. इसी वजह से टीचर्स भी शेड्यूल इस तरह से प्लान करते हैं कि वो बच्चे का थोड़ी देर के लिए इंटरेस्ट और फोकस पे काम करते हैं, देन दे मूव टू सम एक्टिविटी, देन दे डू इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पेरेंट्स आर आस्किंग इज कि बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए. ऑल्सो जो बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, बिकॉज कुछ बच्चे sometimes they enjoy, sometimes they are very angry, sometimes they are not happy. So जो behavioral changes बच्चों के हर रोज पेरेंट्स देखते हैं या जो वो हो रहे हैं, उसे कैसे एड्रेस किया जाए या पॉजिटिवली उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, जहां बच्चे का लर्निंग भी ना खराब हो, बच्चे का बिहेवियर और उसका रूटीन भी सेट रहे. सो आई थिंक दिस इज the next important question and the challenge जो parents हर रोज face कर रहे हैं, and they want to know some positive techniques जहाँ वो और बच्चा दोनों settle रहे. Okay. So let's divide it into two. So आप just correct me if I'm wrong. So the first question is being asked to me is how to create the discipline for online learning. Is it, Chikita? Am I Concentration और focus उनका रहे. डिसिप्लिन तो बच्चा इंस्ट्रक्शंस लेते लेते दे नो कि अब मुझे किस तरह बैठना है, कब पूछना है, कब मुझे मेरी टीचर जब क्वेश्चन पूछेगी देन ओनली आई हैव टू आंसर. सो द क्वेश्चन इज कि बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन कैसे उनका ऑनलाइन टीचिंग पे रहे, और जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं बच्चों के, तो उसको कैसे पॉजिटिवली मैनेज किया जाए. ओके, सो चिकिता, ये दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक्ड हैं. You know, they're going to complement each other, and that's why I think आपने भी logically एक साथ पूछे हैं दोनों. So behavior, एक तो मतलब I feel very, you know, I'm the children's advocate
that behavior change, why is it only been talked about among children? Aren't you and me changing during the lockdown? Right? So behavior change होना बच्चे में लाजमी है, because बच्चे स्कूल गए, उसके बाद पार्क गए, उसके बाद घर आए, सो गए, और सुबह उठ के अपने बच्चों से बोला कि अब आप आज के बाद बाहर नहीं जाएंगे. Lockdown starts. And that was the first time the children were asking parents, what do you mean by lockdown? What do you mean by it? It's massive. It's massive. It's not a thing which is going to, or which got over in a day or two. बच्चों के लिए, their minds are very fragile. Okay, so of course this was massive for a child to take. Secondly, पैंडेमिक से पहले हम अपने बच्चों को समझाते हैं, you have to be social, you have to greet everybody, आप सबसे बात कीजिए, shake hand with your friends and so on and so forth. और सेल्फ आइसोलेशन गलत है, आप क्यों किसी के घर जाके अकेले बैठ जाते हैं, आप क्यों मोबाइल लेके अकेले बैठ जाते हैं. और फिर अचानक से हम अपने बच्चों को समझाने लगे, you have to be self isolated, you have to maintain social distancing. आप क्या सोचते हैं कि एक छोटा बच्चा क्या करेगा ओवरनाइट? All right, you understood it, I understood it, or the parents understood it, because हमें पता है उसके repercussions क्या हैं. But for a child, the best part is what I like, but which is the scary part also, they are fearless. You see young children, you tell them वहां पे current है, and you see them the only place they'll find peace at putting the finger inside that socket. All right, so they are fearless. So when they are fearless, then what went wrong? The thing which went wrong their way, or which is adding to their stress and anxiety and behavior change, is you and me as parents. What did we do? Unconsciously, we passed on and we parked all our fears into them. Pandemic, 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 the world is going to end, there is no tomorrow, we are not going to work again, we might not live to see the day again. News channels are going on, I see parents glued to this kind of negativity 24/7. I buy the point. Yes, this is a difficult time for all of us, but are you doing any good talking about it 24/7? That's my question. Are you benefiting yourself, or are you benefiting anybody back at home by telling them you will not see tomorrow morning? Or so many people have unfortunately have lost their lives. What good are you doing to your child? You have to be very mindful आप किस तरह की बात अपने बच्चे के सामने करते हैं, because children are very fragile to these vibes. All right, you have to create that positivity, that yes, there is a difficult time, but then there are every kind of times that we face. There is fun time, there is Diwali time, so this is lockdown time. All right, and believe me, Chikita, children are very resilient to whatever you put them into. They find their peace somewhere, and just need to make them understand the positive side of it, that now you're going to get to spend more time with Papa. We will not let Papa go to office, we'll ask Papa to stay at home and play with you. Find out ways to connect with them, to give them peace. Okay, you are giving them your fears and aggression. इसमें दूसरा part बहुत important है. We need to mindful about what we are feeding them, not only through thoughts, through food also. पहले क्या होता था, you're giving your children whatever the energy drink, or these high on sugar and energy drinks and chocolates and all kind of junk food and all. Now with this guilt that my child is self-isolated and he or she is not meeting the friends, we are kind of piled up everything. Okay, and including my own, the children simply open the cupboard, munch on to whatever comes to their way and gulp it down. Now what is the problem? The repercussion is that the sugar level is very high, the energy is very high inside the body, and I have no activity to drain it out. So what am I going to do? I'm going to channelize it through the anger, the aggression. गुस्सा आता है, मुझे समझ में नहीं आता. The children are very young, they don't know how to emote, especially these young children. वो लोग कितने तो बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखे. So they feel the emotion, they don't know how to emote. They feel, they are at lack of words, as we quote. So what you have to do is, if you see the aggression in your children, first of all, be very, very mindful about what they're eating, when they're eating.
बहुत कुछ मिडनाइट मंचिंग स्नैकिंग जो है ना, वो बहुत गिफ्ट्स देती है, उसके बहुत सारे तोहफे होते हैं साथ में. What are they digging into? Then what are you talking to them about? How you are communicating with them? And the extremely important thing is you have to give words to their emotions. Okay, so for example, if you find that your child is not in a good mood, okay, what do we do as parents? क्या बात है, आप सुबह ही गुस्से से उठे हो, क्यों इतने चिड़चिड़े हो? You know, the child is already confused, उसको पता ही नहीं है कि उसको गुस्सा आया है, because these are very young children, they are not clear about their emotions. उस पे आप पूछ रहे हैं कि आप गुस्सा है गुस्सा है गुस्सा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका बिलीव बन जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर बन जाता है, और वो नेगेटिविटी उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है. चिल्ड्रन बिलीव what parents ask them to believe. That's the fortunate and unfortunate part of the story. All right, you tell them that, you know, the tooth fairy comes and take your teeth, right? Believe it. They believe it. That is the power of belief. उनके लिए मम्मा ने बोल दिया कि टूथ फेरी आती है तो आती है. Whether they see Santa Claus आके गिफ्ट रख के चले गए, किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा उनको हिंदुस्तान में कभी आके गिफ्ट रखते हुए, but because mama papa ne bola, that's the power of belief. Okay, so when they trust you so much, why talk negativity, why pass on your fears to them? Talk positive, talk about good things, you know, sit with them and say, आप आज गुस्से में लग रहे हैं, हो सकता है गुस्सा खेलने को लेकर हो सकता है हमें आज अपने पसंद का खाना ना मिला हो सकता है आज मम्मा ने कुछ अच्छा नहीं बनाया हो. So, you know, talk as if you are them. Give words to their emotion. You'll see them calming them down. You'll see a much calmer child. Okay. One more thing. Dedicate parenting time. Parents मुझे बोलते हैं मैम आजकल तो लॉकडाउन है, हम तो 24 घंटे उनके साथ हैं. And I ask them, really? Really? गाड़ी भी घर के बाहर 24 घंटे खड़ी है, बट इस्तेमाल नहीं हो रही. Right? True. Don't be a parent who's parked inside the house. Be a parent who's useful. Just by staying there does not mean that you're with your child. Okay, so if you're busy, you're working parent or anything like that, it's fine. Take out a dedicated time, और वो टाइम आपको ऑनेस्टली अपने बच्चों के लिए रखना है, दिमाग से भी. Not that, you know, you're carrying the baggage of office and then you're connecting with your children. No, रखो बाहर 1 घंटा. Now the friend, switch on the friendship mode, and since they are not meeting their friends, play with them physical games, you know, a soft pillow fight or walk through a jungle. And you know, हम लोग तो मतलब we do a lot of online drama for young children, so we emphasize and we play these games and children enjoy. We have an hour class every day, Chikita, and parents tell me, ma'am, वो इतने आराम से सो जाते हैं उसके बाद, because they kind of use that energy playing those games that you make them play. Do that with your children. Do that, and they'll get tired, which is very good. It is very good to rest. Give them a proper night's sleep, make a routine for them, and you'll see them calming them down. This will help them to learn online also. क्योंकि बच्चे रेस्टलेस हैं, रात को लेट सोए, फिर उनसे सुबह उठा नहीं जाता, फिर आप उनको उठा के वैसे का वैसे ही बिना प्रॉपर, यू नो, उनको फीड किए या उनको रेडी किए उनको बिठा देते हैं. आप डू यू रियली फील दैट अ चाइल्ड कैन कनेक्ट लाइक दैट? You need to make them get into a proper time management. For that, you need to follow time management. Be physically fit. आप सुबह उठ के कुछ कीजिए, you know, Zumba or class or something like that, and tag them along. चलिए हम आप कुछ खेलते हैं आज. You know, so you have to do it together. So, and that is where they learn to, you know, find themselves calmly and sitting online. It's very important. I totally agree. और आपने मेरे बाकी के क्वेश्चंस पूछने से पहले ही सारे आंसर्स एड्रेस कर दिए. प्योर लर्निंग नहीं हो रही है, कैसे मैनेज करें? हाई एनर्जी है बच्चे में, कैसे मैनेज करें? बच्चे का मूड स्विंग हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करें? न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करें? All these things. So one last question now, Dimple. What you will suggest our parents? Any technique for them to stay positive? Because parents को इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि parenting is not easy at all and it's a lifelong journey. So आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि वो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, और ये जो इतना सारा रेगुलर उनका काम है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उसे पॉजिटिवली वो कैसे मैनेज करें? इसका सबसे अच्छा तरीका है, एक सिंपल पेपर लीजिए और अपने आप को देखिए कि आप दिन में कितने रूल्स कर रहे हैं. सो राइट नाउ अ पेरेंट इज
playing a role of course, whatever they are doing at office or at the work front. They are playing a role of a cook, maybe. They're playing a role of somebody who's help at home. They are playing a role of a parent. They might be playing a role of a child also, अगर घर में आपके बुजुर्ग हैं, आपके parents हैं अभी, by God's grace. So अब ये 5 रोल हैं. The problem happens जब आप intersect कर देते हैं सब कुछ 24 घंटे में. You kind of make a खिचड़ी out of it, and then it is difficult to digest at times. रोज रोज खिचड़ी नहीं खाई जाती है ना, you know, somewhere for a change it's fine, but not every day that you can survive on खिचड़ी. So what do we have to do before becoming a mindful parent? Become a mindful you. सबसे पहले दिन की शुरुआत अपने आप से कीजिए. Whatever you like coffee, you like tea, you like lemonade, you like iced tea, make the best of it for you. Give yourself the best start of the day. Wake up 10 minutes before your normal time. आप अगर 7 बजे उठते हैं तो 7 बजने में 10 मिनट पे, 6 बजे उठते हैं तो 10 मिनट 6 बजने में, जो आपका रूटीन टाइम है जब से आपका दिन शुरू होता है, उससे 10 मिनट जल्दी उठिए बस. And have your own peaceful 10 minutes. Chikita, right now the nature is blessing us. You know, you have the clear most sky. You're fortunate enough in Delhi to see a rainbow every second, third day. I see pictures on Instagram going, you know, I spotted a rainbow. Oh, it's beautifully raining. Enjoy that. That gives you a lot of peace every morning. Look out, breathe well. Have a good warm cup of coffee or a lemonade, whatever you like. And then sort out your day. Think about what time is my office work going to start. Before this is my time for breakfast. जब आपका time है breakfast बनाने का, खाने का या deliver करने का, keep yourself low at the office work. I understand इतना सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, but you kind of have to figure it out somewhere. Then this is my office work, and then this is my time with my child, which is very important, because right now your child is not meeting any of his peer group, his friends, teachers, कोई रिलेटिव नहीं मिल रहे हैं. तो अभी तो आपको थोड़ा सा टसल है. टेक आउट दैट माइंडफुल टाइम विद योर चिल्ड्रन, एंड बिफोर गेटिंग इनटू बेड, अगेन द 10 minutes, whatever you like doing. You like reading, you like listening to music, you like to do meditation, you like watching a nice Netflix series. You deserve it after the day you have spent, right? You deserve it. So that is the kind of praise for yourself, the pat on your back that you did a great job, and you will be able to balance it out. प्रॉब्लम होती है जब हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, फिर वो एग्रेशन हर जगह निकलता है. सो 10 minutes in the morning, 10 minutes before you get into bed, and you have a much calmer day. Excellent advice. I think we all should follow this and stay positive. Yeah. Thank you very much, Dimple. Thank you very much for the wonderful session. I can see मैं बहुत सारा chats में भी पढ़ रही हूँ. Parents are also very happy and they're appreciating. Thank you for all the techniques you have shared. And we had a great session with you. I would also like to thank all the parents. Parents, thank you very much. I hope हम लोगों ने आपकी queries को इस session के through address किया है. हम आपके लिए इसी तरह webinars, we will keep on organizing these webinars. आपके जो भी queries होती हैं, आप हमें you can write to us. हम आपको address करते रहेंगे, और I think साथ में मिलके positively parenting को हम सब enjoy करेंगे. और I think that's it. Dimple ने already इतनी सारी चीजें आज हमारे साथ share करी हैं, and she has given us so many techniques कि मुझे लगता है कि अब at least next webinar तक आप लोग बिल्कुल charged up रहेंगे and सारी techniques और strategies को use करेंगे. Please share your feedback with us. Thank you very much for your time. Thank you for joining, everyone. Thank you. Just before we leave, I want to thank you, Chikita, your team, for arranging this beautiful, wonderful platform. Everybody back there, and thank you each one for joining and listening patiently and mindfully to whatever we have to say. And I could also read a few queries. Parents का इतने सारे questions होते हैं, so they can write in later or they can connect us. We have a YouTube channel at by the name Dimple @SoulRights, and where we cater to all your parenting mindfulness needs. They can write their questions there, they can leave a remark there, and they'll be addressed back. So it's Dimple @SoulRights at YouTube or Insta, anywhere they can go and follow our page. Thank you so much, Chikita, and your team once again for giving this platform. Lovely. Thank you, Dimple. Have a great weekend ahead. Thank you, parents.
आराम कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड नेक्स्ट वीक वी विल सी यू अगेन. Thank you very much, everyone.